Badlaav starts with a question. Can we create an India where everyone has a place they call home? Can we empower women and build safer communities? Can we revive our ponds and lakes, providing water for all? For most, these are just debates. But for some, these are opportunities to meet challenges with determination, to plant seeds of hope, to spark a change, to impact and inspire the entire nation. Catch the second season of an incredible initiative on the change makers building a new India. Badlaav Humse hai. A campaign by AU Small Finance Bank and Network 18. India's diversity is something that we celebrate every single day. And it's this diversity that gives us extraordinary human beings who go beyond their regular calling and bring about change that creates impact to profoundly benefit mankind. In an endeavor to recognize and applaud such everyday heroes, AU Small Finance Bank, in association with Network 18, launched the second season of Badlaav Humse hai. In the first episode of our two-part special, we had shared some of the incredible stories captured through the course of this campaign. In this episode, we bring to you more such stories of hope, compassion, relentless hard work, and change. We also urge you to go to our website to catch all the stories there. Our first story today is of Dr. B.M. Bhardwaj and Dr. Madhuri Bhardwaj, who started Apna Ghar. This is the story of people who haven't just been given a second chance, they've actually been given a second home. Let's take a look. अपना घर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लोग रोड पर पड़े हुए हैं, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है और उनको इंतजार है कि उनको कोई भोजन खिलाए, कोई दवाई दे, कोई अपनाए, कोई कहे मैं हूँ ना, ऐसे व्यक्ति असहाय हालत में दम न तोड़े, उनके लिए अपना घर कॉन्सेप्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ पर प्रभुजनों को हर तरह की चिकित्सा मिल पाए, उसके लिए 26 तरह के होम माता बहनों के लिए हैं, 26 तरह के चाचा भैया दादा के लिए हैं, सभी तरह के प्रभुजनों के लिए अलग अलग होम हैं। इस तरह की तो फैसिलिटेट करते हैं बिल्डिंग को। अब तक 25,500 प्रभुजी को तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें हमने ठीक करके यहाँ से न गए हों। हम इंडिविजुअल एक एक को देखते हैं, एक एक की संवेदनाओं को, एक एक की ज़रूरत को। माता बहनों के लिए सिलाई सेंटर है, उसमें 60,000 यूनिफॉर्म बनती हैं अपना घर में, सभी सेंटरों के लिए, प्रभुजनों के लिए। दोना पत्तल बनाने की मशीन है, अगरबत्ती बनाने की मशीन है। 1 से 1.5 साल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर देंगे प्रभुजनों के लिए। उससे जो भी रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू प्रभु जी के ऊपर ही व्यय होगा। Apna Ghar is an incredible example of how change can uplift and empower people who are most in need of society's care and intervention. Our next story is about improving treatment outcomes to helping malnourished children contend with cancer. Let's have a look at the story of Cuddles Foundation. Me and my husband used to pledge a part of our salary for children with cancer for their treatment at the Tata Memorial Hospital. I saw a mother with a baby in her lap. That was really the moment of epiphany when it struck me that there are some people who are in hospitals with sick children, children with cancer. That is the moment when Cuddles Foundation was formed. The reason we exist is just one. We say that if a child has come to treatment, then the child shouldn't get left behind because the child is malnourished. From a one-person initiative, today it has grown to almost, we have a team of 100 people. We chase social good instead of profits. In the next 5 years, we want to be able to reach out to 80% of children
in the country who are fighting cancer. Another shining example of how one person with a small game-changing idea can impact the lives of thousands of people. Our next story is of Dr. Sunil Kaul and his organization Mental Illness Treatment Alliance, or META, providing mental health care in Northeast India. Let's have a look. When we came to this area, there was practically no medical care here. And it's around that time I had gone to meet an organization in Guwahati, which works only with the mentally ill. And they told me that a lot of patients are coming from my area. When I came back and I found that there were plenty of mentally ill. And so that's where the first camp was held after a bit of training of our staff. Gradually, our team did a good job, and very fast, from 20 patients in the first camp, we were jumping to 100. Our own mental health program then started 2010. Initially, it was not even called META. One thing after another, and it's reached a stage where META is what we call an alliance of partners. We also felt that patients should be given free of cost medicines. By the time we reached 400, 500 patients in this place, we realized we had to raise a lot of money to keep giving the doctors their fees. So we designed the app in such a fashion that a social worker could record all the symptoms with a minimal amount of training, so that at any point of time we could match the symptoms with the diagnosis and the diagnosis with the treatment. Many patients now are coming here, so many more people are getting convinced that mental illness is not something which is happening by Devi Devta or Bhoot or what else, and hence it's a treatable thing. I think by now we must have reached out to close to 20-25,000 patients, because some of them get well and never need medicine again. So in that sense, over a period of time, it's been very satisfying. We actually are targeting that we should reach around 100 camps within the Northeast in the next few years, and probably reach out to anybody else from elsewhere. So as I said, the move has already begun. From reducing domestic violence to promoting community cohesion, this program, started by Dr. Sunil Kaul, is an inspiring story of change for good in an often unheralded part of India. Let's move on now to our next story today, Brave Souls Foundation, a beacon of hope built on the resilience of acid attack survivors. जब मैं अपने कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा सामने एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधकर खड़ा है और मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, अचानक से उसने मेरे चेहरे पर ग्लास भरा हुआ डाल दिया। मेरा नाम शाहीन है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। एसिड अटैक इज़ द मोस्ट हीनियस क्राइम, क्योंकि ये हर टाइम आपको अपने साथ कैरी करना पड़ता है। आप जब आईना देखते हैं तो आपके चेहरे पर दिखता है। जो स्ट्रगल मैंने फेस किए, मैं नहीं चाहती थी कि वो और सर्वाइवर्स को भी फेस करने पड़े। ब्रेव सोल्स फाउंडेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है अपना घर। तो अपना घर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के रहने के लिए बनाया गया, क्योंकि जब अटैक होते हैं तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है और जो सर्वाइवर्स यहाँ रहते हैं हम उनको बेस्ट मेडिकल केयर तो देते ही देते हैं। साथ में हर सर्वाइवर की इंग्लिश क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है। What happened to your face? I am in acid attack survivor. बेसिकली सर्वाइवर्स को उनके राइट्स के बारे में पता नहीं होता, उनको अवेयर करते हैं। तो हमारा इन दो चीज़ों में मेन हमारा इंटरवेंशन रहता है कि हम उनका क्रिमिनल केस देखते हैं कि उनको जस्टिस दिला सकें, उनको फेयर कॉम्पनसेशन दिला सकें। हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया में काम करे, सारे स्टेट में हमारे ऑफिसेज हों, शेल्टर होम हो, ताकि किसी भी सर्वाइवर को कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए।
एसिड अटैक सर्वाइवर्स में ख़ास बात है कि वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं। Brave Souls Foundation stands tall as a source of healing, justice and empowerment for acid attack survivors. Shaheen Malik's vision and vigor are proof that even in tough times, we can all find strength and drive change like a brave soul. And we hope these stories will have a lasting impression on you and motivate the change maker within you. With that, we'll take a short break right now, but we'll be back with some more inspirational stories, so stay with us. Welcome back. Badlaav Humse Hai is an initiative by Network 18 and AU Small Finance Bank focusing on the stories of change makers from across the country, highlighting the importance of recognizing unsung heroes who brave the odds every day to create positive impact. Do remember to log on to our website to catch all the stories there. Our next story today is of Anil Pradhan and his Young Tinker Academy that is changing the realm of traditional education. In our education system, we don't have any connection with the education. That is, students could not relate to what they are reading in their subjects. Young Tinker जो है वो एक आइडिया है कि कैसे बच्चों को इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हम स्कूल में ही बना सकते हैं। बच्चे जो थे हमारे हर बैकग्राउंड से बच्चे थे, बच्चे शहरों से भी थे, बच्चे ऐसे गांव से थे जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चे ऐसे जगह से थे, आइलैंड विलेजेस से थे, बच्चे ऑर्फनेजेस से थे। हम ये जो यंग टिंकर स्पेसेस होता है इसको एग्जिस्टिंग स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में, रूरल कम्युनिटीज़ में लेके इसको कम्प्लीटली सेटअप करते हैं। जो कंप्लीट करिकुलम होता है ये 4 फेजेस में होता है। पहला फेज़ है टिंकर, दूसरा है मेकर, तीसरा है इनोवेटर और चौथा है एंटरप्रेन्योर। टिंकर फेज में बच्चा अपने शहर, अपने गांव, अपने टाउन इसकी अवेयरनेस वो पाता है और अपने बारे में भी जानता है। सेकंड फेज होता है मेकर फेज। मेकर फेज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्किल्स सीखने की बात करता है। थर्ड फेज आता है हमारा इनोवेटर फेज, जहाँ पे बच्चे ने अभी जो भी स्किल सीखा है इससे मैं कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, इनोवेटर फेज में सीखता हूँ। और चौथा फेज है एंटरप्रेन्योर फेज कि मैं कैसे बिजनेसेस बना सकता हूँ। हमारी जो टिंकर प्रोग्राम होती है उसमें बच्चा पूरा गांव बनाता है। When we created this team who represented India at the NASA Rover Challenge, it was a really big hit. Now students could believe that यदि वो लोग जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। हमने जब यंग टिंकर को शुरू किया था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे थे। 3 बच्चों से कब 30 और कब 300 हो गया पता नहीं चला। आज हम 2,50,000 से ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट 2 साल में हम 400 से ज़्यादा टिंकर स्पेसेस बनाएं जिससे कि 1000 से ज़्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स बने और ये वो यूनिकॉर्न्स हैं जो कल देश के नक्शे को बदलेंगे। This journey of change by Young Tinker Academy is a reaffirmation that education transcends the boundaries of a classroom. Now let's take a look at the remarkable story of Dr. Radhesham Garg and the Mayuri School of Learning with the belief that all children are special, all children are precious and all children are equal. मयूरी का जन्म अक्टूबर 1986 में हुआ था। जब पता लगा कि ये बच्ची फिजिकली, मेंटली, मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, हम इसको रिहेबिलिटेशन के लिए हैदराबाद में भर्ती रखा। उसके बाद हमें वहाँ से प्रेरणा मिली थी कि हमें एक स्पेशल स्कूल खोलना चाहिए। मैं तो समझूंगा भगवान ने इनको कष्ट दिया, ऐसी आत्मा बनाई कि ये मानसिक रूप से पीड़ित है, इनका अपना काम नहीं कर पा रहे, परिवार के लिए भार बने हुए हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी ये तो समझेगा कि यार ये बड़ा कष्ट में है, इसका कष्ट दूर होना चाहिए।
पहले 5 बच्चे थे, धीरे धीरे करीब 10, 15, 20, 25 मानसिक रूप से पीड़ित, और जो बच्चे सुनते नहीं, बोलते नहीं, वो भी बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। और तुम्हारा वोकेशनल ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी हमने इनका अवेलेबल कराई और वो भी आज इनको सिखा रहे हैं। एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था, वो सुनने बोलने में थोड़ा असमर्थ थी। हमारे 8वीं क्लास तक उसने एजुकेशन लिया। शादी होने के बाद वो स्वयं हमारे विद्यालय में ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आई और उसने काफ़ी बच्चों को अपने ही मैनर से, अपने ही ढंग से उसने बच्चों को ट्रेन किया। रिसेंटली हमने मयूरी पंखी नाम से एक इंस्टीट्यूट खोली है, उसमें सिलाई की मशीन रखी है। वो थैले बनाना या पैकेट बनाना, इस तरह के छोटे छोटे से काम हैं, उनको हम सिखाते हैं। तो हमारे 1-2 बच्चे तो सरकारी नौकरी में लगे हैं, तो वो बच्चे ट्रेंड हैं और घर में अपना कुछ इकोनॉमिक बेसिस बन गए। हमारा फ्यूचर विजन है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बच्चों को पैरालंपिक के लिए तैयार किया जाए। Dr. Radheshyam Garg and the Mayuri School strive to make these children equal participants of our society by championing inclusiveness, diversity and empowerment. Our next story is from Bengaluru. This is an inspiring tale of change and compassion, and its chief protagonist is Koopa, Compassion Unlimited plus Action. Everywhere that you turn, you see animal cruelty. I think our whole role is to question what can we do to make their lives better. We decided to build an ecosystem wherein all animals feel safe and protected. The trust was registered in 1991. It was purely rescue, protection, welfare. We are on the streets with ambulance cases, picking up animals, sterilizing community cats and dogs, giving counseling for cruelty cases. So in CUPA, we do not compromise on medical care or treatment, and anything that is needed by the animals for its best recovery, the centers have all upgraded machinery. We are also looking at a very challenging time ahead. The sustainability is only human kindness. And that's how Koopa has created a revolution in animal welfare. The entire team's unwavering sense of care and purpose inspire each of us to believe that with compassion and decisive action, we can all in fact be agents of change. The final story in this episode is one of transformation that is unfolding in Pune. And this change is being brought about by Swayam Shikshan Prayog. When we started working in Osmanabad in 1998, it was a drought-prone region where farmer suicides were rampant. To improve the situation, we saw only one possible solution: to empower the women from every family in this village. We decided to bring women into the small micro enterprises, support them in terms of market finance and so on. We have started identifying more and more opportunities for women to come into the businesses. So it's like water, sanitation, health, and agriculture is a major sector where there are a lot of opportunities. There is a realization came from women itself, like when we are talking about the environment protection, why not we see like we are bringing more and more climate angle into our work.
Patil's mission to reshape the lives of women in drought-prone areas reminds us that the power to instigate change resides within us all, irrespective of the circumstances. Do remember to log on to our website to catch all the stories there. Bringing you these inspiring stories has given us immense joy because each one of them teaches us something new and has shown us that anyone can create an impact that can bring about positive change. That's all from all of us here, but before wrapping up this two-part special, we'd like to leave you with a very special message from our campaign ambassador, Gul Panag. Each of these change makers has taught us something new, showing us that each one of us can create an impact that can bring about positive change. क्योंकि बदलाव हमसे है.